कोई और ऐप से डाउनलोड कर नहीं जीसी ऐप पर चाहिए जीसी की आती Don't say I am getting my जैकेट पहन के भी ऑफ कर देंगे मैं ठीक है कहूंगी मेरे को आज घर नहीं लग रहा है सूरज का ये वो साल में 2-3 बार फिर भी लगता है साल में इसको ज्यादा क्या कर रहा है बादल में सुबह 6 बजे से क्या बोला और मुझे क्यों बुलाया मैंने क्या तुमने कुछ किया ये तो बैठ अरे हटना कल के वजह से कल के अरे सब सच बोल के कुछ कस्टमाइज करके मत बोला तो बस तूने बोल दिया ना हमको मेरे पेरेंट्स ने बोला मैंने कुछ पेरेंट्स बता दूं क्या it's not hot to so तो सिर्फ पूछ देखे सुने और ये अगर टाइम हो गया रेखा मैम को कॉल करके पूछा कि रेखा मैम लाइक अगर मीटिंग इंस्टीट्यूट में हो या नहीं तो उन्होंने बोला कि वो निकल गए उसके पापा से उसको कुछ बोलते हैं उसको अच्छा नहीं लगा तो वो फिर अगेंस्ट बहुत एंग्री हो वो अनप्रॉपर हो सकता है तो मैंने मैम ने बोला कि कौन थे कौन रेखा आगे बोला कि उसके पापा ने देखा सोच ऐसे के बाद जब गुस्सा आता है तो कुछ भी सबका आईडी कार्ड किधर है जो भी आईडी कार्ड नहीं मिलेगा ना 100 रुपए फाइन है इसके बाद से कंपल्सरी आईडी कार्ड
मैम सेम नहीं करते एक तेरा ये भी सब अलग है, तेरा ये सब अलग है, बट एक अभी अच्छा है। कोई ना कोई एक उसके से भी मैटर होता है, ठीक है। क्यूट है भाई उसके पहले वाले से बेटर है, कुछ बोलने से आई मीन उसके पहले वाले को मिल रहा है ये बाबा ने पूरा चीज को छोड़ के क्या आपने फिट अरे वो तो वही पहनती है, मैंने तो पिछली बार देखी तो बाबा ने किया बहुत सही है सबसे मेरी आईब्रो पिक है हां अरे वो एक आईब्रो ऊपर से क्या गलत है अरे बता दे कोई डबल ट्रिप लेता तो हां अच्छा भी कोई नहीं आ तुझे फोटो देखा है उससे बस में हां उसमें बहुत कैंडिड पिक है उसका बेस्ट एक्सप्रेशन और मेरा था मेरा भी था ये उसमें चाहते आई थिंक सो लग्जरी जनरली ऐसे कंसर्ट कुछ लोग बाकी सब नहीं डबल टेक्निक कंसर्न डबल सॉरी हंस रहा है वो अरे किससे बैठे तो बोल
किसको बुलाया है? नहीं नहीं था, ये नहीं था। ये एफबीओ ना। तो अब देखो बुलाया है इसको नहीं परिवार को इतना झूठ बोलना, प्लीज को झूठ मत बोलना। भरोसा नहीं है। अरे कल कुछ हुआ था, ब्रेक में बना दी, ब्रेक में बना दी। जब चीटिंग I don't know. Tennis? अरे बाय गॉड नहीं लग रही अभी ये बोला और लकी क्या करना कहता है तेरा भाई मैंने तुझे राखी बांधा तेरे को 500 दी। अरे 500 मेरे को हाफ चाहिए। मैंने मां को दे दिया। ये तो मेरा इसके ऊपर ये लगा हुआ है भाई बोल रहा है No. No. Right now, हम लोग क्या करते हैं? What we done last time? Balancing, right? Observation, reduction, and all this is done. Balancing we are done, na? Balancing completed today. We have to start with types of See the types of reactions, okay? Then activities, okay, na? Okay. So now today we are going to work on the balancing. I think so. Last time we given the questions. Have you done the homework? I was You, asking you was in the first lecture. Or you were present last time. last time. You were present. I was asking last time was my first lecture. Good. But have you done the homework? Copy down the previous. कुछ नहीं मेरे को नहीं बुलाया था। Okay, okay. अनुराग, how are you? बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। कैसे चल रहा है? हाँ? It's very hot outside, isn't it? Tremendous heat. Okay? Heat wave. For next 3 days, you will be very careful. Drink water. Keep yourself hydrated. Plus, 1 to 4, you should not go outside. It is very much warm. Okay. Anyway, let us see. This is a part and parcel of climate change. So we have to, of course, it will take another 15 days to get acclimatized with this particular, what do you say, heat. Why? Because initially we feel a lot of, warmth or hotness, but later on we'll get used to it. Okay, we'll go at 1 o'clock also, nothing to worry. Why? Because our body will get used to this kind of, for example, temperature change. Come, welcome back. Now, so no, today we are going for the types of chemical reactions, right now? Yes. Today we are completing this topic. Double lecture, na? That's completed. Types of chemical reactions. Types of chemical. Okay. Now let us understand this. Some look. Have you opened the book? Volume. Yes. Adeline, homework किया आपने? Oh, wrong book. Right day but wrong book. चलो ठीक है. Types of chemical reaction. Right? Now what are the different types of chemical reactions? We have classified the reactions in 2 ways. We can say. One is on the basis of the number of reactants. Number of reactants and products. Okay? Second way of classifying is on the basis of energy change. Listen to it carefully. अब इसका मतलब क्या है? Number of reactants, number of molecules or the number of reactants in the products. That is the one way of classifying. And second is the energy change. Normally, 2 types of, for example, reactions are there. One is basically related with heat changes. And second is, or we can say the first is the number of reactants in the product. So let's see how to go about it. If you see, for example, here
The type of chemical reactions on the basis of the first type. Okay, that's it. Okay. Like for example, here the type of reaction where if you see this particular reaction, carbon, when you burn in oxygen or coal, which is a solid, when you burn in oxygen, this is a coal. Let us say, okay, and you burn in air. It's an open combustion process. क्या हो जाएगा? Immediately ये जो oxygen है, इसको actually what convert करेगा, and it will give you carbon dioxide or heating, right? On initiating that ignition, okay, and you get large amount of what carbon dioxide. Plus, if it is there are some impurities over there, they will remain as ashes over there. Okay, so what is important over here? Here you find two reactants are combining to form a single molecule of product. So here the product is single and the reactants are two. Two reactants, one product. Yes or no? This type of reaction is said to be what? Combination reaction. So whenever you find two reactions in which two reactants are combining, two or more reactants combining to form a single molecule of product, it is called as combination reaction. Okay, it's like saying this here. For example, here, if you take hydrogen gas, react with chlorine gas, to give you hydrogen fluoride gas, it is a combination reaction. इसको sunlight में दिया. Okay. At the same time, for example, here, if you take nitrogen, react with hydrogen to give you ammonia. ठीक है ना? तो आपको क्या मिलेगा ये? Ammonia is again a combination reaction. Then we have, for example, here, okay, suppose we have this particular reaction H2 plus O2 giving you H2O. Again, it is a combination reaction. This is a gas, this is a gas. Right now? So, HCl is a gas. नहीं, very good question. ये जो hydrogen plus chlorine giving you hydrogen chloride. Actually, hydrogen chloride is not an acid; it's a gaseous form. When we dissolve in water, इसको अगर पानी में डालेंगे, तो उसको HCl solution बनेगा. तब जाके वो, then it will show, for example, acidic nature, H plus and Cl minus. Otherwise, it is a gas. Okay, remember. So hydrogen chloride gas. वो बाद में आएगा. But first, so what is the combination over here? The combination is that two elements of the reactants, two or more elements in the reactants combined to form a single product is called as a combination reaction. इसका उल्टा, second reaction if you see, okay, and what is that? It is called as decomposition. So no, either. What is decomposition? Decomposition means what? Edlen breaking. Breaking of reactants. Breaking of one reactant molecule into two or more is called breaking. Okay, it's called as decomposition. Let's take an example. But यहाँ पे breaking तीन प्रकार के. First is what? Thermal decomposition. अब वो breaking of the compound can be done thermally. Yeah. Go. Sit down. Okay. Breaking of the compound thermally is called thermal decomposition. You know, इधर देखो ध्यान से. अब breaking of a compound thermally, तो अगर क्या हो जाएगा? It's like saying this way. You take, for example, calcium carbonate and you strongly heat it. क्या मिलेगा? Calcium oxide or carbon dioxide. So that means when one compound breaks open into what? Two or more products in the presence of heat, it's called thermal decomposition. जब आप heat से इसको break करेंगे एक compound, look at this. This is one compound. Heat is supplied. Heat is supplied. Okay, and then what happens? Third, this is two products we are getting. One is calcium oxide, other is carbon dioxide. Right? Thermal decomposition. Decomposition is breaking. Okay. Second, decomposition means what? टूटना. कुछ चीज टूट जाए. सर मेरा दिल टूट गया. टूट गया मीन्स क्या? मार्क्स अच्छा नहीं है, मेरा दिल टूट गया. मतलब क्या है? लिटरली हम लोग का दिल तो टूटता नहीं है, बट अंदर से अभी हाउ टू एक्सप्रेस दैट? सर, my heart is breaking over there.
What is the reason? The reason is that this particular compound is breaking down with the help of heat. Okay? Okay, so mayus ho gaye. That is the meaning of decomposition. Is a bigger word, but its the meaning simple hai, just breaking down, simple. Okay? Second is nothing but what? We can say, for example, any question? कुछ भी question में पूछिए. Okay, now सुनो. Second is what? For example, photochemical decomposition. इसको फोटोलिथिक भी बोलते हैं. Photochemical decomposition. ठीक है ना? अब ये photochemical decomposition है क्या? For example, here you suppose you take one, for example, suppose you are sitting in a room. यहाँ पे आपका एक टेबल है. Okay, it is a study table और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना है. और यहाँ पे okay, there's a window where sunlight is actually what sneaking through on the table, and then you have kept, for example, in a bowl, let us say silver chloride यहाँ पे. Silver chloride is a compound, okay, which is having a formula AgCl. ठीक है, और ये sunlight के presence में क्या हो जाता है कि this silver chloride, okay, which is actually what having white color, ठीक है, in the presence of sunlight, it changes into what? A grey color or maybe silvery kind of color of silver, and some greenish yellow gas comes out, which might be very not very easy to see, but a greenish yellow gas goes out. And after some time, this particular white color compound becomes grayish or silvery kind of color of silver, and some gas goes out. And this particular compound has broken down with the help of what? With the help of sunlight. आपने heat नहीं किया, आपने just रखा है इसको. हाँ, तो ये light के presence में break हुआ. Okay, so this kind of reaction is said to be what? Our vision is what? A photochemical reaction. It's not a decomposition, but photochemical reaction. In the presence of light, we are able to see. Our eyesight gets activated in the presence of light. So our vision is also kind of reaction, which is a photochemical reaction. But not maybe decomposition, but a kind of reaction. जब light के presence में कुछ दिखता है या कुछ होता है, तो उसको photochemical reaction. और वहाँ पे जब break होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? Photochemical decomposition. आपने एक compound को दो material में break किया, इसको बोलते हैं decomposition. This is in the presence of light. Okay, so light into chemical energy, heat into chemical energy. So every form of energy ultimately converts into one form into another. तो आपने इधर क्या किया? Heat को energy में chemical energy को convert किया, इधर light को chemical energy. अब electricity को chemical reaction में convert करें, chemical energy. So let us see that. You have to follow this point. So लिखिए, पहले इतना लिखिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना? Upward arrow is gas going out. For the gas. So photochemical reaction does not require something, just any form of light energy, right? Which one? Photochemical No, decomposition. light only will require. Any form of Any form. Photo means light. That's all. Okay. So what is combination? Is a reaction in which two or more substances combine to form a single product. What is decomposition? Breaking of one single reactant into two or more products. Here, you can talk about in three ways. One is thermally, second is in the presence of light, or in the presence of electricity. ठीक है ना? इसी बंद है कि चालू है? और दोनों ऑन है ना? Temperature is very much high, I think. Then we make it little bit low. Yes, sir. It is becoming very much sticky. Whether it then afterwards again we'll try to change it. आगे समझ में? Okay.
आप लोगों को मैंने क्लास वार्निंग दी, क्लास में डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है? जेव्हा आयडेंटिफाय केले पॅरेंट्सला एक मेसेज जाऊ द्या, त्यांच्याशी आपण आज काय करू, ठीक आहे? तुमच्याकडे पॅरेंट्स नेक्स्ट टाइमला वेट नको करू, डायरेक्ट त्यांना सस्पेंशन लेटर कर. और इसको कोई भी किसी भी नाम से गलत नाम से कोई बुलाएगा, कोई चिढ़ाएगा नहीं. हाँ. Diagram नहीं draw करनी. This is just a visualization. Because what is science? Science is visualization. आपको visualize करना है कि तुम एक रूम में बैठे हो, वहाँ पे sunlight आ रहा है, and you have kept silver chloride. After some time that silver का color change होगा, silver chloride. It will become metallic silver. It will get reduced to metallic silver, and chlorine gas will be liberated. Okay, you will get some greenish yellow. Sometimes it may not be visible. Okay, because of the room in which you are sitting, and therefore it gets spread out. Therefore, you may not be able to see that greenish yellow gas because chlorine का color क्या है? Greenish yellow. वैसे उसको नाम दिया chloras. A Greek word chloras means greenish yellow. ठीक है ना? Greek word जैसे Helios, sun god. ठीक है ना? तो sun god को helium, because finally hydrogen is becoming helium in the sun, and that's why Helios. तो ग्रीस लोग जो है वो sun को worship करते हैं because उनका energy, sun का energy is increasing the we can say for example the energy in our system. तो हम लोग को राजा बना देते हैं. जो सन का एनर्जी है, जो सन राजा है, तो आपको वैसे टाइप का एनर्जी मिल रहा है. जैसे पीपल दे टेक सन बाथ अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रांगली मिलेगा. बिकॉज सन इज अ लीडर. आई प्रोटेस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, तो इसलिए सन को हम लोग ने यहाँ पे बहुत महत्व दिया. क्यों? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप डार्क रिएक्शन नहीं कर पा रहे तो आपको सनलाइट की प्रेजेंस में मिलेगी. इफ हीट इज नॉट देयर, द बेस्ट वे इज सनलाइट. लाइक जिस जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो व्हाट पीपल दे डू, इन ऑर्डर टू टेक बाथ दे रिक्वायर वाटर. तो वाटर को टेरेस पर रख देते थे और सन का एनर्जी से वो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता था, लुकवार्म. देन दे यूज्ड टू टेक बाथ. दे डिडंट हैव गीजर एंड अदर थिंग्स. तो उन लोग क्या करते हैं, सन का एनर्जी से थोड़ा पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता था दोपहर तक, एंड इन द आफ्टरनून दे यूज्ड टू टेक बाथ. ओके, अर्ली मॉर्निंग को 7 लेट अस से 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री वो टेम्परेचर चलता है. स्पेशली नॉर्थ साइड, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब बहुत कोल्ड हो जाता है. ओके ओके, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन एकदम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. ऐसे लगता है हाथ है ही नहीं. ओके, या पैर है ही क्या नहीं, इतना ज्यादा नहीं यार. पहले तो इतना कोल्ड है पानी, वो 3 डिग्री से हम लोग को रूम टेम्परेचर में लेके आ रहे हैं, जस्ट टू मेक इट वार्मर. ठीक है, so because that is the best way, because गीजर में तो बहुत पैसा डेफिनेटली बहुत फ्यूल जाएगा. अगर आप पानी गैस में गर्म करेंगे भी तो बहुत पैसा जाएगा. इससे जो बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन. तो सब लोग क्या करते थे, बकेट अपना ऊपर रख देते हैं टेरेस पे. ओके, और उससे हम लोग पानी गर्म करके नहाते. तो ये यूटिलाइजेशन है एनर्जी, अगर नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, ओके. वैसे हॉलैंड है, हॉलैंड में विंड एनर्जी, विंड का हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है, जापान में न्यूक्लियर एनर्जी. जापान इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश है क्योंकि उसमें पूरा एनर्जी, अपना हाफ ऑफ द जापान का एनर्जी न्यूक्लियर से आता है. न्यूक्लियर एनर्जी, रिमेंबर. तो जस्ट अंडरस्टैंड, तो ये एनर्जी का ही सोर्स है, व्हिच इज सनलाइट. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड काइंड ऑफ एनर्जी. लिखा आपने, लिखिए मजे से सुनो. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड व्हाट इज दैट?
The third decomposition, okay, is right now. The third one, if you see, is called as what? Electrolytic decomposition, which is also called as what? Electrolysis. हाँ? Yes. इसमें क्या करते हैं? इसको बोलते हैं electrolysis. Okay? What is electrolysis? Electrolysis means what? Lysis. Lysi. Lysis means breaking. Breaking with the help of what? Electricity. We see glycolysis is what? Breaking of complex carbohydrates. Glycogen. मालूम है glycogen? Okay, starch को break करने के लिए आपको energy लगेगा. So glycolysis. वैसे hydrolysis means what? Breaking with the help of what? Water. Hydra means aqueous, पानी. ये सब word बाद में आएगा. Hydrolysis. Hydrolysis is breaking of any substance with water. Breaking of any substance, breaking of glycogen, we can say, or the bigger carbohydrate molecules into smaller. Breaking of anything with the help of electricity. Clear? Hydrolysis, glycolysis. तो हम लोग को electrolysis देखना है. अभी electrolysis देखना है. Okay? What is electrolysis? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक beaker लेना है. You take two graphite electrodes. You know how the electrolysis is done? Electrolysis is done with a discipline. Because you want to convert electrical energy into what? Chemical energy. Okay? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ये दो इलेक्ट्रोड है. One is connected to negative terminal of the source. Okay? Negative terminal of the source means this is something which is called as what? Cathode. Okay? Graphite. और फिर ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है? उसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स. ये जो वर्टिकल लाइन है, ये बिगर लाइन है, which is positive. The one which is connected to positive terminal of the source, okay, is called as anode. ठीक है? Okay? सुनो इधर देखो. Now, okay, then what we do? We actually what take an for example, an ionic compound or electrolyte. Okay? Now electrolyte can be fused or fused in a melted form में या उसका aqueous solution. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर लेंगे plus little amount of acid to make it a good conductor. It is called acidified water. Okay. Now this water splits up. Very few molecules of water splits up as H plus ions and OH minus ions. Okay. But because there is a plus sign and minus sign, okay, what they do? They attract each other and make this reaction reversible. This process reversible. इसको बोलते हैं ionization या dissociation. Okay. Anyway, now let's come to electrolysis. The moment we pass electricity through this, okay, the electrons will start flowing in this direction. Negative से electrons जाएंगे. Okay, अब ये क्या होगा? These H plus ions and OH minus ions are present in this reaction. I mean in this solution. Clear? अब देखो ध्यान से. अब जब तुम actually what electricity pass करते हो, before passing they were moving in a random manner. But the moment you pass electricity, okay, through this particular electrolytic solution of this acidified water, okay, these H plus ions, what they do? They start moving towards the negatively charged terminal. That means at the cathode, सुनो इधर देखो. Nobody will write, just listen to it. At the cathode, the H plus ions will go. They grab the electrons. Electrons इधर आएंगे. Okay, they start banging to get that electron, and when they get the electron, they become what? H2. So you will find some bubbles coming on. So two hydrogen ions will go there, grab two electrons over here. दो hydrogen जाएंगे इधर.
एक हाइड्रोजन इसको ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इसको ले लेगा, you will get what? Some gas coming out. What is that? Some bubbles coming up, touching the electron, hydrogen. दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो somewhere exit करेंगे, just like our BST bus. If people are entering from one door, so from the other side the people have to, for example, go out also, exit. So there is an exiting of electrons from this side. How? Now these OH minus ions, they are having extra electrons. So they go to what? Anode. At the anode और एक activity हो रहा है. At the anode, okay, remember this. इसको oxidation reduction भी बोलते हैं actually, but वो बाद में आएगा जब again I'll explain you. At the anode, these OH minus ions will go there. They will start knocking on those electrodes, and in the process when they start knocking, okay, ये अपना जो energy इसको देते हैं. Energy is given in the form of what? Electrons. Electrons cannot exist in the solution. याद रखना, electrons अंदर यहाँ पे नहीं रहेंगे. Electrons जब वहाँ पे activity होगा, you will knock it, and we consider it manifest in the form of what? Electrons. So electrons यहाँ पे बाहर exit की तरफ जाएंगे. That means cathode is an entry door for electrons, and anode is an exit door for electrons. In other words, OH minus loses one electron, become OH group. Okay? अब दो OH group अगर आप ले लेंगे ऐसे, तो क्या मिलेगा? See, H और ये OH जोड़ दो, क्या मिलेगा आपको? H2O. Yes or no? And this oxygen which is alone cannot remain alone singly. तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बैलेंस करने के लिए O2, and here we write half 2. Now you will say, sir, half doesn't look nice. So what you do? You will write 2 OH over here, losing 2 electrons, and then 2 OH of similar kind again will come on the electrode. So here you will get what? 2H2O, and this will become 1. Or the other way around. और एक चीज कर सकते हो, ये जो 2 OH है, पूरा रिएक्शन को इससे मल्टीप्लाई करो, किससे? 2 से. Yes or no? 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है? Okay, so what do you get? 2OH plus 2OH is how much is it? Here 2OH, and this half O2 will become what? 1. If you want, you can balance this way. Again, यहाँ जो OH हुआ, use किया इसने, it will become OH, right? Now this OH plus similar kind of another OH will join with each other because they are unstable. So immediately this OH will combine with this H to give you water, okay? And you are left out with only one oxygen. अब oxygen तो single exist नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करते हैं? उसको molecular form में लिखते हैं. But I want to keep it as one only. So इसके आगे half लिखते हैं. Because this half into 2 oxygen is how much? 1 only, na? That's why. Okay? But now when you want to, you use a fractional moles or fractional amount is not allowed. So what do you do? Multiply throughout by 2. Because कोई भी reaction को adjust करने के लिए जैसा balancing करते हैं, वैसे यहाँ पे fraction को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको multiply by such an appropriate number, which will give me what? What is it? For example, an integer, or we can say whole number, which will not be fraction. That's why हम लोग इसको multiply. अगर तुमको सिंपल वे में करना है, और एक चीज, देखो तुम बोलोगे सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो somewhere 2 electrons only will be lost. So 2OH minus will lose 2 electrons, becoming what? 2OH. But problem with 2OH, what we are getting half mole of oxygen. तो हम लोग क्या करेंगे? पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. कितना हो जाएगा? 4H plus ions plus 4 electrons, becoming what? 2 moles of hydrogen. Yes or no? अब इसको देखो, यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई दिस बाय 2. दैट मींस दोनों रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट यू विल गेट? दिस 4OH minus losing 4 electrons, becoming what? 4OH groups. अब देखो 4OH groups अगर मैं एक्चुअली what अलग-अलग लिखूं, ये देखो, तो हम लोग को एक होल नंबर मिलते हैं कि नहीं? देखिए, ये H और ये OH कंबाइन कर दो, क्या मिलेगा आपको? वाटर. ये H और OH कंबाइन करो, क्या मिलेगा आपको? और एक वाटर. यस और नो? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या मिलेगा आपको? इस बार आपको सिंगल जिन्हें नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू आया. That's why 4 is a number which you have to multiply. You understand my point? Okay? So this is the reaction. But आपको इतना सब झमेला करने की जरूरत नहीं. क्या करना है आपको? ये सब रब करना है, क्योंकि हम लोग को ये चैप्टर में, ओके, ये सब नहीं देखना है. क्या देखना है हम लोग को?
So no, all these, for example, messy things at this moment you're not supposed to do. What you're supposed to do is that electrolysis, you take water, acidified water, okay, acidified water, pass electric current. ये देखो, because हम लोग को इतना नहीं करना है कि अपना यहाँ, for example, okay, pass electric current, what will happen? Hydrogen and oxygen will be separated, not mechanically, but electric current. इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नहीं सर, आप इधर से हाइड्रोजन पकड़ो, मैं ऑक्सीजन पकड़ती हूँ और हम लोग तोड़ देते हैं। ये कोई, ये अपना लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। तुम लाख चाहो सर, आई एम कीपिंग वाटर, लेट अस से सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ वेसल and keeping under the sunlight, can this sun god actually split water in the form of H2 and O2? No. sun बोला ये मेरा काम नहीं है, तो किसका काम है? इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग ये तोड़ सकते हैं। So there are certain reactions which can take place only with the help of electricity. तुम एक ऐसे मेंबर से बात मानते हो, तुम सब मेंबर की बात नहीं मानते अपने घर में। हाँ, डैडी बोलेंगे तो I will do it. My elder brother says I will not do it. My younger brother says I will not do it. You are having some kind of, let us say, favoritism, that I can do this reaction only in the presence of what? Electricity. ये reaction electricity के सिवा और किससे भी नहीं होगा। तो बोलोगे सर heat ले लो, it will not go. Light ले लो, नहीं। Okay, तुम एक दिन गुस्सा हो और खाना नहीं खा रहे हो, एक मेंबर बोल रहा खाना खा लो, नहीं खा। दूसरा ये थर्मल एनर्जी, थर्मल, बाद में किसी ने फॉर एग्जांपल लाइट, वो ये मेंबर बोल रहे हैं, बट तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से ओके चलो आई विल ओके। तो समटाइम्स यू एक्चुअली व्हाट, फॉर एग्जांपल, ओके, बात एक ही मेंबर से मान सकते हैं। दैट मींस वाटर को हम लोग सिर्फ एक ही मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। व्हाट यू से सर, व्हाई? बिकॉज़ वाटर इज अ वेरी स्ट्रांग मॉलिक्यूल, इसको इजी नहीं है ब्रेक करना। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर सकते हैं। व्हाट यू गेट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे अभी बैलेंस करो। व्हाट इज सी, इतना बड़ा तामझाम करने से अच्छा क्या है, वाटर को हम लोग ब्रेक किया H2। व्हाट इज H2? बट वेयर H2 इज गोइंग? कैथोड। वेयर ऑक्सीजन इज गोइंग? एनोड। इतना एक्सप्लेन करने के लिए, यानी ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन द प्रोसेस। ओके, so now when I saw, for example, everybody's space was becoming small because of 2 and X4, so I thought let me explain it this manner only, at this level of 10th standard or 12th standard ka level. ठीक है? Anyway, now what is important over here? Hydrogen is a gas. Hydrogen and oxygen. So this water is getting electrolyzed by what? Or is breaking down in the presence of what? Electric current. Silver chloride is breaking in the presence of what? Light. And calcium carbonate is breaking in the presence of heat. 3 types of decomposition. Got it, huh? So लिख लो, and then we try to work on 2 more processes. और फिर मैं एक अपना एग्जांपल दूंगा और उसको आपको मैच करना है. Let me see whether you are able to do it or not. I'm sure you will be able to. ठीक है? हाँ, ये लिख लो. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. क्या इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस. वेरी गुड, आ गया. इलेक्ट्रोलिसिस लिखो. ओके, हेडलाइन लिखा आपने. थर्ड रिएक्शन. This is the decomposition reaction. You write down A, B and C. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग simple kind of reaction देते हैं, which is called as displacement and double displacement साथ में. Now, what is displacement and double displacement? Let us come together. Okay, आपका? Yes, sir. Rub it out. Yes, sir. Don't forget to write electric current. ये condition. See, every chemical reaction has got 3 parts: reactants, condition, and products.
right? Acidified because water is a poor conductor. Very good question. Water is a poor conductor of electricity. To make it a good conductor or initiate a process of conductivity. Okay. Good conductor means which allows the electric current to pass through. यानी जो ions, because good conductor, see what is a poor conductor? Water जब तुम actually what present रहेगा, so it does not produce ions. Ions are carriers of electric current. Ions means cations and anions. But water does not produce large number of ions. But अगर suppose तुमने acid डाल दिया like HCl या H2SO4, normally we put H2SO4. क्यों? H2SO4 is non-volatile acid. तो जैसे डालेंगे तो H plus ions और sulfate ions form होंगे और ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. हाउ? कंडक्ट मींस ये देखो ये पॉजिटिव है, ये कैथोड की तरफ जाएगा. ये तो बल्कि आयन से वो एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा बट नहीं जाएगा. उसके जगह पे कौन सा आएगा? नाउ दिस सिंस दिस पर्टिकुलर H plus ions has started and very few H plus ions and OH minus ions are produced. Very few. So ये initiate करेगा process, that means it will go there, grab the electrons in the process. This OH has to actually what? Go and actually lose electrons. Okay, so bulky ions will not go because this is a very bulky ion. And bulky ion क्या करते हैं? वो धीरे धीरे चलते हैं. जैसे बड़े planets, Saturn बहुत धीरे धीरे चलते हैं. But Mercury बहुत fast चलते हैं क्योंकि छोटा planet है. तो जो छोटे ions हैं वो fast move करेंगे. जैसे तुम simple thing, यहाँ पे टीवी है, ठीक है, और कुछ अपना यहाँ पे सीन चल रहा है और यहाँ पे तुम्हारे 4 मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है, पापा मम्मी तुम और ये तुम्हारा ब्रदर. इधर डोरबेल है, ठीक है, डोर का ये ना किसी ने रिंग किया तो सबसे छोटा मेंबर है ना वो जल्दी भाग भाग के जाए. क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है, उसको ये टीवी में इंटरेस्ट नहीं है. और जैसे फादर या मदर या तुम्हारा एल्डर ब्रदर या सिस्टर उठेंगे तब तक तुम उधर पहुंच गए. क्यों? क्योंकि तुम लाइटर हो. तुम लाइटर हो means what? You are much faster, very much quick, and you are opening the door. So same way, अगर H plus ions है, OH minus ions है, sulfate ions है, तो यहाँ पे क्या H plus ions, OH minus बहुत smaller ions है, वो जल्दी move करेंगे to the opposite. Right? Just an example. Okay? So this is the idea. मैं ये to initiate the process, H plus ions जाएंगे from acid and then the H plus ions from water will go. ये इनिशिएट कर दिया. फिर जैसे तुमने स्टार्ट किया पढ़ाई, तुम्हारे को देखा देखी नेबर ने स्टार्ट किया, तो किसने कौन इनिशिएटर है? तुमने इनिशिएट किया, उसके माइंड में डाला अरे पढ़ना जरूरी है, टाइम हैज कम. या तुम्हारा पार्टनर जो बेस्ट पार्टनर है, ही हैज इनिशिएटेड, ओके, that now it's time to study. All you know, our fun is over. Now we are in 10th standard. We have to work hard. Okay, just an example. ठीक है, तो हम लोग को ये poor conductor. Poor conductor means substances which do not produce ions, sugar, urea, benzene, alcohol, which are electrolytes, acids, bases, salts. All salts are electrolytes because they produce ions. The ones which do not produce ions are called as what? Non-conductor of electricity. Okay, so we take only in the case of electrolytic decomposition electrolytes. But water का electrolysis show करना है, तो उसको initiate करने के लिए हम लोग अपना थोड़ा acid डाल देते हैं. Okay, acidified water. ठीक है? To make it a good conductor, ये लिख के रख दो. To make it a good conductor, we use acid. Water is a poor conductor. To make it a good conductor, acid is added. Good question. This is very important. Okay. समझ में है? Yes, sir. रोज तुमको अगर अच्छा मार्क्स लाना है, रोज जल्दी उठो और एक डिसिप्लिन लाओ अपना लाइफ. 5 बजे उठो और 5 बजे से पढ़ना शुरू करो. And then you are studying ना? हाँ, वो तो वही डिसिप्लिन मैनर में अपने को वो करना है. रोज 5 बजे उठो और 11 बजे सो जाओ. तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. That is a much better. Because जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, all the let us say the universe आपको हेल्प करेगा. ये important. Universe means basically you will be help. They will be helping you in studies. सबसे important part.
हो गया सबका? Yes, sir. तुम आराम से अगर लेजीनेस शो करोगे और अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू बी टफ जॉब. नाउ लेट्स कम टू लर्न. इधर देखो. I'm not saying you don't have fun, but at the same time, पहले study बाद में fun. Now let's come to the third type of reaction, which is called as what? Displacement. What is displacement? Now displacement is based on activity series. Okay? ये देखो. Here, activity series. And second is, after this, the next reaction is what? Double displacement. Okay? दोनों इधर देखिए. पहले हम लोग देख लेते हैं displacement reaction. What is displacement reaction? It's based on metal activity series. Now this activity series, you know very well, is actually a series of metals arranged in the decreasing order of their activity or reactivity, we can say. Okay? Reactivity goes on decreasing as we move from top to bottom. तो सबसे टॉप एलिमेंट पोटेशियम है, देन सोडियम है, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen. Now, hydrogen is the middle element where the reactivity is considered to be 1. The element which are above hydrogen, the reactivity is higher than hydrogen, so it is greater than 1. Elements which are below hydrogen, our reactivity is less than 1. इन्हें आप कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड आराम से स्टोर कर सकते हैं, पर वही सोडियम वेसल में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करे. Below hydrogen. Negative, yes, because they are not reactive. कहो ना, कार मिलेगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पब्लिक है क्यूरियस, होगी सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड. A child is asking his father, Father, when I am going to get my car, you promised me that when I get 95% in my board in engineering exam, three months have passed, and you said, for example, that you will give me a car. So kaho na, father, kaho na, car milegi, means when you will get my car. Is it going to be Alto, Zen or Ferrari? Public है curious. Public means my friends. My friends are curious to know. होगी silvery color, platinum color या golden color. ये son is asking his father after 3 months of results. Father, Dad, I got 95%. You promised me a car in engineering exam, and I got my job also after 3 months also. अभी मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, फिर भी आपने मेरे को कार अभी तक दिया नहीं जो आपने प्रॉमिस किया. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, फादर उनको अभी जवाब दे रहे हैं कि बेटा मिल जाएगा तुमको, अभी फिलहाल ओके तुम अभी जॉब पे कंसंट्रेट करो. ओके, जस्ट टू मोटिवेट द फादर एक्चुअली ट्राई टू गिव हिम कि चलो सन विल स्टडी, इसलिए कार का उनको एक मौका दिया. यानी देंगे डेफिनेटली, बट ही इज आस्किंग नाउ. एनीवे, तो ये कैसे याद रखेंगे? Now suppose for example displacement. What is the meaning of displacement? An element, ये metal है, ठीक है? And this is a salt solution. Okay? Let us say for example salt solution is BC. Any salt solution is ionic in nature. इसको तुमने पानी में dissolve किया है, तो it's aqueous. And this is a solid salt. Now what actually happens? This metal A is more reactive than metal B. What it does? This A displaces B and makes it what? For example, AC and B comes out. Yes or no? Somewhere. Now, for example, if I take zinc, देखो zinc लिया आपने.
और कॉपर सल्फेट में डाल दिया. What is copper sulfate? Blue color. नहीं क्रिस्टल नहीं. ब्लू कलर क्रिस्टल है बट पानी में डाल के ब्लू कलर आ जाएगा ना. हाँ पहले क्रिस्टल. वेरी गुड. कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब क्या होगा? Now check in the activity series. Where is copper? Yes. Where is silver? Sorry, zinc? Above. And the element which is above that particular other element, तो ये element displace करेगा इसको. Yes or no? That means Zn will displace copper from copper sulfate solution. It will lose electron. That means it will get dissolved. And what you'll get? Zinc sulfate. And what is zinc sulfate? Colorless. And what is that? You will get reddish brown PPT of copper. Displacement reaction. You are sitting alone. Your bench partner is sitting over here with another partner. अभी तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे यहाँ पे दो पार्टनर ये तुम्हारे फ्रेंड लोग बैठे इधर एंड दे आर चिट चैटिंग और तुमको देख के उसको गुस्सा आ रहा है. ये तुम्हारा जिगरी दोस्त है इधर बैठा और तुम ये दोनों अच्छा दे आर हैविंग गाला टाइम. गाला मींस हैप्पी टाइम. ठीक है ना. अब ये देख के तुमको बहुत चिढ़न आ रही है. आई एम नॉट जेलस. Okay, but what is important? So immediately you give a tough look to this person. वो डर के मारे आ जाते हैं. तो इधर आ जा भाई इधर. And then you sit over here, and he goes over there. Okay? That means what is important over here? That person gets displaced because you are more powerful than the other person. Displacement reaction. You have displaced this person. This person who was sitting over here has been displaced. Why? Because zinc is more reactive than copper. How do you conclude that displacement has taken place? Blue color solution has become colorless. The moment the blue color solution becomes colorless, means it is actually what? For example, displacement rate. How will you come to know? For this, imagine this solution. Listen to it carefully. ऋतिका सुनिए, ये देखिए, ये बहुत मजेदार चीज है. तुमने एक जिंक रॉड लिया, ओके, और ये कॉपर सल्फेट में डाल दिया तुमने. In the process of stirring that solution, जैसे तुम stir करते गए, ऐसे stir, थोड़ी देर के बाद ये टूट गया, डूब गया. कहाँ गया वो? Dissolve. जैसे एक बिस्किट कैसे चाय में डालते हो और थोड़ी देर रखते हो और खाने जाते हो, गिर गया अंदर. I will just an example. What is important? Same cheese over here. Had it been copper spoon in zinc sulfate, अगर suppose ये उल्टा reaction करोगे, this reaction will not take. Now suppose, for example, you take copper and react with zinc sulfate. Will this reaction take place? No, because zinc is less reactive than copper. So you will write what? No reaction. That means you can stir zinc sulfate with copper, spoon, rather than what? With the help of zinc spoon and copper sulfate. Likewise, we can, from this activity series, you can come to know which solution we can store in a particular metal vessel. Can we store in silver vessel sulfuric acid? Answer is yes. Why? Because silver is less reactive than sulfuric acid. It will not react. What about gold? You बोले सर मैं इतना बड़ा risk ले रहा हूँ. Gold will it react with normal dilute sulfate? No, it will not react. अगर sulfuric acid आपके gold ornament में गिर गया या उसमें पड़ गया, nothing to worry. It will never get dissolved. Gold is costing 70,000 now per 10 grams. तो तुम्हारा अगर suppose 100 grams का एक gold का ornament है, solution में गिर गया sulfuric, nothing to worry. आराम से निकाल सकते. क्यों? उसमें एक भी उसका दाना dissolve नहीं होगा, क्योंकि वो gold is less reactive than H means H sulfuric acid, hydrochloric acid. H का representation क्या है? Hydrochloric acid, sulfuric acid. याद रखना. ठीक है? तो ये displacement. What is double displacement? अभी double displacement देखो. What is double displacement? Double displacement is a reaction in which you take two salt solutions. Let us say this one. Every salt has got first ion positive, second ion negative. Let me enlarge it. This is a salt solution AB. You take in another one vessel, let us say beaker, and another beaker you take C plus D minus. This is another salt solution. ये देखो. अब ये जो A है,
और ये C है. Now you can say B minus and D minus. There is an exchange, a mutual exchange of these cations. This cation displaces this cation, and this cation displaces the first cation. Mutual exchange of the cationic ions or cations, okay, from two different salt solutions, resulting into what? Two. अगर ये A इधर चला गया, तो what will get? AD. अगर C इधर चला गया, what will get? C B. Yes or no? Oh, what I see? I see this here. क्या क्या AB का क्या हो गया? CB. Here CD का क्या होगा? AD. Just like for example, so when you actually take a beaker containing this particular solution, two solutions, this is A, this is B, this is C, this is D, yes or no? But जब दो इन लोगों को mix करेंगे, either इसको इसमें add करो या इसको इसमें add करो, you will get only one beaker. But let me tell you one thing, out of these two salt solutions, one will be actually what? Insoluble solid, which is called as what? Precipitate. What is precipitate? An insoluble solid. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे आपको solution मिलेगा, but उसके अंदर some solid you will get. And this insoluble solid is nothing but what? Called precipitate. Just like milk converting into curd. So curd is precipitate. और उसके ऊपर जो पानी है, जैसे तुम वैसे tilt करोगे, तो थोड़ा watery kind of liquid मिलेगा. That is nothing but salt. The solution which is, or the salt which is it is soluble, and this salt or that compound, lactic acid, okay, or other components, okay, fats and other things are insoluble. Fat पानी में dissolve नहीं होता है यार. Okay, that means you will get one as an insoluble solid. Let's take one example over here. You take silver nitrate solution, again, and you react with NaCl. Children, ये देखिए, ध्यान से देखिए. Look at this. ये क्या है? Silver nitrate. Silver ions will displace sodium. Sodium will displace silver. Okay, and mutual exchange of what? Cations. You can say this is like exchange program. A student from India is going to America. American student coming to India in your school. Exchange program. Teacher, principal is getting exchange. Sir, my principal is going to America. An American principal is coming to this. Especially principals, they do not exchange. Teacher exchange program and student exchange program are there. Especially Germany side, yeah, India, okay, Germany, that exchange is there. Okay, normally, huh? Because one anybody's school, any student had come from outside India. No, nothing to worry. सुनो, कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन के बाद आएंगे. और सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है? NA will come over here. But now NaNO3 plus Ritika, ये क्या हो जाएगा? AgCl. But how will you come to know AgCl is a sparingly soluble salt or precipitate? There is a solubility chart. हम लोग next time वो देखेंगे acid bases salts में. Solubility of this AgCl is very very less. So this you get a precipitate. This kind of example you can imagine. This is happening in your school also sometimes. कैसे? ये देखो. यहाँ तुम और तुम्हारे partner बैठे हैं. और ये एडजेसेंट बेंच में दूसरा एक पार्टनर और एक स्टूडेंट बैठा, क्लासमेट. अब ये देखो, योर क्लोज फ्रेंड, योर फास्ट फ्रेंड इज सिटिंग ओवर हियर, यहाँ पे, एंड दिस पर्सन इज चैटिंग अराउंड वेरी स्ट्रांगली. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर, ये एक्सचेंज करेगा और ये. दिस इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस. बोलेगा तू इधर आके बैठ, मैं इधर आके, एकदम एमिकेबली. आई अंडरस्टैंड. There's no, for example, a kind of hard and fast rule, but I want to just, interact with my friend for some notes and other things. So please exchange the position. So exchange the mutual exchange of position. And this results into what? One insoluble salt. Okay? Now that means there are two types of salts. Soluble salts and insoluble salts. There is one statement. Okay, what is that? Sweet, pretty Alia said no to Bollywood studio company, okay, for films like Sanju, Sawariya, Pushpa. ऐसा करके एक स्टेटमेंट है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सॉल्ट इंसॉल्युबल और कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है. ठीक है ना? ओके, तो हम लोग वो स्टेटमेंट एसिड बेसिस सॉल्ट्स में देखेंगे. फिलहाल इतना लिखो. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए.
सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो. Okay? Solubility chart. This constant salt easily to identify that this is soluble salt. This is insoluble salt. Our NaCl is soluble salt, right? Huh? Our calcium carbonate is our bones are insoluble. ऐसा नहीं sir, I drink water, my bone is missing. ये हाथ वाला bone निकल गया कैसे? Sir dissolve. Has it happened any time? आप पानी पी रहे हैं, neck का bone dissolve हो गया, ऐसा होता है? नहीं. Sir, I am not able to keep my head straight. Why? Insoluble salt, calcium salts. Calcium of the teeth. Sir, I drank 1 liter of water, one teeth has gone, one tooth has gone. Okay? ऐसा कभी नहीं होता, right? Because it is insoluble. Our calcium hydroxyapatite. When you are making it, down arrow precipitate. Precipitate, insoluble solid. When the solid is insoluble in form, it is called as, we show arrow downward. ठीक है? हो गया double displacement? No problem. लिखो. Time is running out. So we'll do one thing. 3 minutes are there. So just copy down. And after the break, हम लोग आगे बढ़ते होंगे. इसमें redox reaction देखेंगे. And then I will give you one test. 10 मार्क का टेस्ट होगा. Match the column test. Okay? और उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा redox reaction है, कौन सा मेरे से displacement है, which reaction is double displacement, which reaction is thermal decomposition, so on and so forth. Okay? हो गया? नहीं ये ड्रॉ ये तो तुम्हारे स्कूल में जो हैपनिंग होता है ये लिखने नहीं ये लिखने के नहीं ये ड्रॉ करना है तो करो नहीं तो जरूरत व्हिच वन ये वाला हाँ ये रिएक्शन लिखना है यस 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 नो रिएक्शन बिकॉज़ कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक हाँ boys boys versus girls but not now afterwards why not एडलिन पानी पीजिए क्या हुआ Ritika, you want to have water in your drink because you are hydrated very important boys also get hydrated तो क्या होगा it's very much warm ये लिखा कि नहीं कहो ना कार मिलेगी और तो जेन फरारी बबली में क्लियर हाँ कौन सा सॉल्ट अरे वो सॉल्ट वाला भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर स्वीट पिटी आ गया वो वाला ना वो आएगा आगे समझ में आएगा we'll stop over here some time then after the break you body is ये वही का है इनको पता हुआ मैं कुछ बोले नहीं मेरा नाम कैसे है नाम मेरे को पकड़ के